Okay, by profession I'm a tour operator now, but I started my career as a guide actually. So I did my history honors as my younger brother from then Government College, now DNGCI, and I did my postgraduate masters in travel and tourism. So अभी जैसे तुम्हें बोला ऐसी younger sister भी है काफी साल देखा है. I mean she grew in front of me actually. So I went to Delhi for law. मेरा माँ चाहता था, she's a single mother. बट मुझे ज़िंदगी में नहीं पढ़ना था. आई वॉज नेवर गुड स्टूडेंट, एवरेज था 50% में. सो इजी कौन सा है सोचा तो विच इज़ मोर यूनिक ऑल्सो फॉर अरुणाचल. सो ट्रैवल एंड टूरिज्म था डिग्री का कोर्स, बिकॉज आई यूज्ड टू ड्राइव माई सेल्फ. ट्रक चलाता था, पेप्सी पिक्सी करता था, तो उसका सेविंग से पढ़ने के लिए गया. अदरवाइज आई एम फुल्ली गवर्नमेंट स्टूडेंट, गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट हूँ, नेवर इन टू एनी प्राइवेट स्कूल्स. सो टूरिज्म वॉज द मोस्ट चीपेस्ट एंड मोस्ट ईजिएस्ट सब्जेक्ट आई चूज. So I never knew कि I will be sitting in front of you and talking about my stories. So जब खत्म हुआ, then again अरुणाचल में कोई नहीं था. I dropped lots of biodata to every tour operator in Arunachal, but nobody gave a hit. कोई reply भी नहीं किया, because they were also struggling. उनका afford नहीं कर सकता एक employee, क्योंकि business भी उतना नहीं था. I could understand. I came back, I did तो guiding किया, guiding में assistant था. Then I didn't learn. But good thing about me was that I was a good, I can speak couple of languages like Nishi, Apatani, I speak some Adis, and I speak Nepali as well as Bengali. Then in times I learned French also. So language always kept me, engaged with people. So it was very easy for me to communicate with people. So when I joined as a guide, दिल्ली गया. दिल्ली में फिर बैक ऑफिस में पढ़ा, बिकॉज आप गाइड करो फील्ड में नहीं, क्योंकि जो डेस्क में बैठता है वो ज़्यादा काम करता है एक्चुअली. बिजनेस तो डेस्क में बैठने वाला लाता है. So I went to Delhi, I worked there for 1 year, and I learned all the nitty-gritty which I could get in 1 year's time, and I come back. One thing I realized at time, I really agree with Tachang as he said कि आपका पास जो aspiration, आपका जो dream है, determination है, जो focused है, वो आपको you need to understand, because you are the one who understands yourself first actually. आपका माँ, जन्म देने वाला माँ भी नहीं समझता, पालने वाला बाप भी नहीं समझेगा आपको क्या चाहिए. जैसा ये भाई ने बोला, right brother, yeah. जो you need to understand your calling कि आपको क्या बनना है. मैं तो बोलता हूँ अगर आप आज भी एक सुअर काट के बेचेगा बोलेगा ना ईटानगर में, I give you 5 years time, आपका पास लाख करोड़पति बन सकता है. ठीक है. What you need is your focus and determination. आप बहक नहीं जाना चाहिए. अरे बहुत तकलीफ हो गया आजकल, सुअर का दाम इतना हो गया, सेलिंग नहीं हो रहा है, तब छोड़ दे, ऐसे नहीं होना. तो when I started, क्योंकि हम post graduation किया, दिल्ली गया, so I was guiding, I was driving, I was boating, I was cooking. Literally I was digging pit for my clients to poop, potty करने के लिए tent, ऐसे करता था. मेरे में वो guilt नहीं था. I never had that attitude कि why I'm doing this. My mother would cry, अरे तुमको हम साफ बनेगा बोल के भेजा था, but तुम तो लेबर का काम कर रहे हैं. But I never had that guilt. And my girlfriend then and my wife now, she also never said that, अरे तुम क्यों इतना छोटा मोटा काम कर रहा है. So which is an encouraging factor. And I started my career when I was 24 actually, started guiding. So I realized I have to do, because single mother tha, so I had my own responsibilities. I never had time to explore around. So tourism ही एक degree था जो पढ़ा है समझा है, and I knew I have to go into it. So I joined a company called Our Country Travels, and उनके साथ मैं 5 years. So loyalty comes again. आपका determination तो ठीक है, लेकिन loyalty, because if you keep switching companies or people working, whom you work under, if you keep switching, your trust is gone already. आपको विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि बोले आप कहाँ काम किए, ओ हम तो तचंग पसंग का भी काम किया था, हम तो हमसो का साथ भी किया है, तुम्हें का साथ भी किया है, तो आप बेकिंग भी किया है, डिजाइनिंग फैशन भी किया है, स्ट्रगल ग्राफिक डिजाइनिंग भी किया है. तो आपको अभी फिर टूरिज्म में आएगा तो आपको कोई ट्रस्ट नहीं करेगा कभी भी. आप जब अपना प्रोफाइल बनाता है, आपको ट्रस्ट लेवल को देखता है, एक्सपीरियंस कितना है और कितना साथ में काम किया. सो आई वर्क फॉर 5 years and I knew it, I cannot switch it. And that company is one of the top company in Northeast now. Okay, so जो aeroplane, जो missing American aeroplane search किया उसका ऊपर. So we started many niche products like rafting, trekking ऐसे करके. So I grew with that and had a free hand and learned a lot. तो वो सीखा. फिर 2010 में I realized कि नहीं, that's it, now I know what I need to do, and I have my own pillars that I have dug. मेरा foundation हो गया. Then I did again. I need to understand कि बाकी, because I know only this tour operator, what is his way of working.
उसका क्या है medium और how he brings in business or how he communicates or keeps the relation with the client and things. Then I did freelancing for next 2 years. फिर मेरा बेटी भी हो गया 2006 में, फिर चैलेंजेस भी बहुत था. वाइफ को जैसे ही नौकरी मिला 2006 में 3 इयर्स में थोड़ा सेविंग हो गया. फिर आई न्यू क्योंकि हमको इतना बिजनेस तो अरुणाचल में नहीं है, 2 इयर्स तो फ्री में ही काम करना पड़ेगा जैसा, बिकॉज दैट्स अगेन मेरा रिसर्च था. मतलब अभी अगर बोलूँ तो सो माई वाइफ वॉज टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली, बच्चा का खाना पीना वो सब करके. देन आई वर्क फॉर मैनी कंपनीज अरुणाचल में ही, फिर दिल्ली से भी, फिर फॉरेन से भी आया क्योंकि इतना साल में But it was only 7 years. तो 2003 में स्टार्ट किया था, तो 2010 में क्विट किया. So I was getting then कोई कम पैसा और इसमें प्रॉफिट नहीं है, तुम 700, क्योंकि I started my career in 250 rupees per day. और ऑफिस में काम करो सैलरी नहीं था, फील्ड में जाओ तो पेमेंट मिलता था. So when I quit with our country, I was getting 1,000 per day. And my salary was 5,000 day monthly ऑफिस काम करने का. Then फील्ड में जाएगा तो 1,000 रुपये दिन का, खा पी के पॉकेट में. And we were happy. My wife was is not demanding till to this day. तो ऐसे किया तो there was company जो आपको सिर्फ पैसा देगा 1,500, लेकिन खाना पीना खुद करना. So very बहुत struggle. फिर 10 क्लाइंट का साथ आपको स्क्वीज करके बिठा देता है एकदम पूरा वो जायंट चेक रिपब्लिक का साथ में बैठ के दिन रात दारू पिएगा, फिर उसका नौटंकी. So yeah, but I never had that feeling कि why I'm doing this, क्यों इतना मेहनत. क्योंकि मैं भी अगर कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, बात करूंगा, किसी का मैनेजर भी बन जाऊंगा तो इजी लाइफ बिताना घर में बैठ के. बट मेरा साथ वो डिटर्मिनेशन था. आई नो वेयर आई हैव टू गो स्टिल. मैं नहीं पहुंचा वहाँ तक, बट आई नो वेयर आई हैव टू रीच इन माई लाइफ. इसे बाहर ने बोला. तो देन 2012 में आई लॉन्च माई कंपनी कॉल्ड BAC Voyages, बैक वॉयजेस, बर्डिंग एंगलिंग कल्चर, वेयर आई स्पेशलाइज माई सेल्फ. देन आई अंडरस्टूड कि अरुणाचल का क्या निश है प्रोडक्ट में, क्योंकि कल्चर बोलते हैं, कल्चर तो कोई है नहीं. अभी आज युवा समन में है तो आप लोगों ने ट्रेडिशनल ड्रेस पहना, बट इफ यू रियलाइज लुक बैक एट इन योर विलेज, नोबडी वेयर्स ट्रेडिशनल ड्रेसेस एवरी डे. सो कल्चर इज ऑलरेडी डाइंग इन अरुणाचल दैट वे. द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कीप इट अप. दैट्स व्हाई वी हैव फेस्टिवल्स लाइक दिस, न्योकुम करो, वो करो, ये करो, बट वी आर नॉट डूइंग इट ट्रूली. व्हेन वी टॉक अबाउट ट्राइब्स, देयर नो लॉन्गर एनी ट्राइब्स लेफ्ट. और जीरो का टैटू वाला आने तो खत्म हो गया, तो इट्स गॉन, द कल्चर इज गॉन. नॉक्टे वांचो में हेड हंटिंग खत्म हो चुका है, फीमेल टैटूइंग जो है वो खत्म हो चुका है, बिकॉज हम लोग का वाइल्ड लाइफ बहुत स्ट्रॉन्ग है, जंगल बड़ा है. देन आई न्यू, आई अंडरस्टूड, देन आई स्विच विद माय कोलीग कॉल्ड लोब्सा, एंड आई स्विच माय स्पेशलाइजेशन इनटू बर्ड वाचिंग. तो बर्डिंग में सीखा. बर्डिंग इज वेरी चैलेंजिंग, बट आई डिड इट बिकॉज आई न्यू सर्वाइव तो करना है, बीवी बच्चा तो पालना पड़ेगा ना, कल्चरल गाइडिंग खत्म हो रहा है. देन आई स्विच माय कंपनी, डेडिकेटेड माय कंपनी इनटू अ बर्ड company. So I'm the only one, and still to this day, the only company in Arunachal Pradesh is dedicated for bird watching trips. So वो क्या, फिर बर्डिंग में भी होते गया, बिकॉज सी बाई प्रोडक्ट्स बहुत होता है कोई भी एक बिजनेस का. सो बर्डिंग का बाई प्रोडक्ट वाइल्ड लाइफ था. तो कोई कैट के लिए आता था, उसको रात को जाना है तो लोकेशन दिखाना है, कैट्स कहाँ आता है. सो आई डिड कैट का वॉच भी कराता है. तो फिर ऐसे हुआ तो फिर नदी का किनारे में ही जाता है, कभी हो गया तो राफ्टिंग भी कराया, फिर ट्रैकिंग भी कराया. सो आप एक निश प्रोडक्ट अपना पकड़ लीजिए जिसमें आप स्पेशलाइज है और कोई बीट नहीं कर सकता. इवन इफ टुडे अगर कोई भी आएगा उनसे, विल टेक अनदर 3 years टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बर्ड वाचिंग और कंपनी क्या है, कैसे करता है. सो यू ऑलवेज हैव दैट 3 years और 5 years का गैप. और मैं 2012 में स्टार्ट किया तो आई हैव 10 years का गैप बिटवीन समबडी स्टार्टिंग टुडे एंड टू गेट इनटू मी. सो 10 years का टाइम है. सो इवन इफ आई नो, आई कैन ऑलवेज कीप माई सेल्फ ऑन टॉप, स्ट्रगल करते हुए, इफ आई कीप डूइंग इट, एज ही सेड, कंसिस्टेंसी. So I keep that consistency. I think I'm following your way, right? So consistency में आ गया. So I'm doing that. So after that, and I फिर हाँ अरुणाचल में फिर एसोसिएशन में एसोसिएट नहीं, उनसे क्या बात है. फिर निशी होके अगर कोई सेक्रेटरी प्रेसिडेंट नहीं बना तो क्या बात है. So I did. I was secretary for Octua, president for secretary for bird watching club, and so many things. But I quit. But and always you need that team. So I become president of Arunachal Photography Club in 2018. So that is when I got my new team. तो न्यू टीम में हुआ तो फोटोग्राफी तो कर रहा है, पहले से वर्कशॉप करता है, फोटो वर्क करता है, वर्कशॉप करता है, फोटो वर्क करता है, फैशन फोटोग्राफी का. There was nothing new or creative coming in. So my team, we decided कि सब कुछ करते हैं. तो in my club we have people who is a doctor, who is a senior surgeon, who is a veterinarian, I'm a tour operator, we have an engineer who is an entrepreneur. So हम लोग सब अलग अलग है, लेकिन we are connected with photography as a passionate, जो हम लोग को कनेक्ट करता है. एक आइडियल से सेम है कि फोटोग्राफी सबको करना है. मैं चिड़िया को खींचता हूँ, कोई लड़की सुंदर लड़की को खींचता है. So we say
You shoot birds without feathers, I shoot bird with feathers. No. So that's how we connected and we came up and then okay photo to hai lekin we have come from different backgrounds. So we have our own experience in life. Like I said, 20 years of experience in travel and tourism. So my other colleague has a doctor. Okay, the other colleague is a photographer who learned photographer. Then the other colleague is an engineer. तो इतना एक्सपीरियंस है व्हाट वी आर डूइंग ये एक्सपीरियंस कहाँ जाएगा कि हमारा बच्चा तो टूर ऑपरेटर बनेगा नहीं माय डॉटर वांट्स टू बी अ राइटर माय सन वांट्स टू बी अ सिंगर कुछ भी बनेगा राइट सो you got 2 more minutes 10 मिनट्स हो गया extra इन लोग का extra दे रहे 2 minutes ओके सो फोटोग्राफी क्लब आ गया तो देन वी डिसाइडेड कि वी शेयर आवर एक्सपीरियंस आवर टैलेंट एंड आवर टाइम इन लाइफ स्ट्रगल को जो है आप लोगों को शेयर करेगा बोल के बताएगा सो वी स्टार्टेड डूइंग इको कैंप्स इको एडवेंचर कैंप्स I'm just saying, your department को भी, your affairs department को जब propose किया, they like the idea. So we choose a particular place जो deprived section of state है. So हम लोगों ने अंजाव को select किया था to get connected because I went for a trekking up there. So वहाँ नेहरू से पढ़ के आया, APCS में 2 बार किया ऐसे करके. And वो लोग मेरा पोर्टर जनरेटर बुक के ले जा रहे, बकरी बुक के लिए, बैग बुक के. तो हम अरे तुम लोग ग्रेजुएट ऐसे क्यों कर रहे? हम लोग का लड़का तो ऐसे करता नहीं, तुम लोग क्यों कर रहे? सर कोई उपाय ही नहीं है. Other than that, अगर वो पोर्टर नहीं बनता आर्मी का वो ओपियम बिक्री करता है ओपियम प्लांटेशन करके बिक्री करता है देन आई फेल्ट वेरी बैड सो मैं आने के बाद मेरा क्लब मेंबर को बताया कि चलो क्योंकि वी वर चूजिंग वेयर टू डू द वर्कशॉप ये ट्रेनिंग प्रोग्राम देन वी सिलेक्टेड अंजाव सो वहाँ जाके उनके साथ जब कनेक्ट किया बिकॉज माई आइडिया और आवर आइडिया इज दैट कि हम लोग को कोई नया वेंचर या नया कुछ नहीं करना है हम लोग को नेचर के साथ ही रहना है और नेचर को ही यूज करना है क्योंकि पेड़ काटेगा तो एक बार में खत्म लेकिन पेड़ को रहते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं क्योंकि पेड़ का ऊपर चिड़िया आता है फल लगता है सबको शेड मिलता है नदी है तो हम लोगों ने वहाँ वाइट वाटर राफ्टिंग के एडवेंचर टूरिज्म को एम्फसाइज किया है तो यूथ हम लोग का ऑलरेडी स्ट्रेंथ है हम लोग के पास मसल है ताकत तो है नेचुरली हम लोग का लड़का के पास टैलेंट भी है बट हम लोग को मालूम नहीं कहाँ यूज करना है सो वी टॉक्ड अबाउट वाइट वाटर राफ्टिंग वी टॉक्ड अबाउट बर्ड वॉचिंग वी टॉक्ड अबाउट एंगलिंग क्योंकि क्लाइंट तो आएगा ऑलरेडी अरुणाचल तो is the last Himalaya of India which is untouched and India का जो $1 billion industry है tourism का definitely वहाँ आएगा so we are teaching them CPR emergency rescue कैसे करना है health का वो कैसे करना है then photography को सिखा रहा है so that अभी तो वो लोग भी touch and go हो रहा है but they will realize क्योंकि हम लोग को भी consistency डालना पड़ेगा ना बच्चा को भी तो क्लास 12 साल पढ़ाना पड़ता है तभी जाकर वो डिसाइड करता है डॉक्टर बनेगा ना इंजीनियर बनेगा so we are on to it so Tachan was one of the resource person he just come in and he really enjoyed right with us spoke to the kids they were all excited so हम लोग का आइडिया है जैसे ओमो ने बोला how we give back so we are not because I cannot employ everybody right but I can share my ideas where you can get yourself employed because government job में तो देखा है इतना घोटाला क्या क्या हो रहा है और हर कोई नहीं दे सकता आपको अपना ही करना है एक ही चीज को पकड़ो मैं